Hello friends, this is Jasmeet Bhatia and today we will talk about studying in Manitoba. Yes, Manitoba, Canada, the important province hai, and there are a lot of queries coming to studying in Manitoba. So today we're going to discuss about Brandon University. Brandon University, Manitoba. So Brandon University is located in Brandon city and which is like 2.5 hours away from Winnipeg. So Brandon University ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ 18 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ. It's a public university, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ and 1899 established ਹੈ Brandon University. So बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे हैं ਜਿਹੜੇ कि यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हैं. So I feel Brandon University is an ideal location if you're looking at studying in Manitoba especially. So 2900 plus undergraduate students are studying in Brandon University. I told you the location is very close to Winnipeg. Nearest international airport is Winnipeg International Airport. ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਚਲਰ ਐਂਡ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ. Bachelor degree is for 4 years and master is obviously for 2 years. IELTS requirement is 6.5, no band less than 6 for undergraduate programs. और कुछ programs जिमें कि nursing, psychiatric इन्हां दी जिहड़ी IELTS requirement है that is above 7 bands. Application fees ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 140 Canadian dollars ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੀਲ ਪਲਾਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ $33,000 to $36,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਲ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ $20,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਫॉर Brandon University. So if you're looking forward to apply for September intake, then last date is 1st April. And if you're looking forward to apply in January 2022, then 1st August is the last date to apply for January 2022. Academically, you must have 70% marks in your last studies, whichever you have done. 70% marks the requirement है. पर गैप का मुद्दा बड़ा उठता है कि what is the gap requirement. जे ਅਸੀਂ गैप की गल करिए ਤਾਂ कोई गैप की प्रॉब्लम नहीं हैगी till the time you justify कि what you've been doing. चाहे ਤੁਸੀਂ कुछ नहीं करते सी, पेरेंट्स ਨੂੰ हेल्प करते सी ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ justify कर सकते हो एंड ਤੁਸੀਂ Brandon University 'ਚ ਆਪਣਾ student visa apply कर सकते हो. TOEFL is also acceptable and you can apply with TOEFL, PTE and IELTS to Brandon University. Turnaround time for the offer letter can be 4 weeks. Sometimes between 4 weeks you can expect the offer letter. And nursing education, psychiatric nursing वर्गे बड़े ही important programs हैं. जे तुसी साइंसिस च अप्लाई करना चाहते हो तो मैथ्स इज़ कंपलसरी, बट जे तुसी बिजनेस प्रोग्राम पढ़ना चाहते हो बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैन नो मैथ्स रिक्वायर्ड. सैकेंडली जे तुहाडे IELTS चो मार्क्स घट हैं जिवें 6.5 नो बैंड लैस दैन 6 नहीं है, थोड़े घट हैं तो तुसी ESL दे नाल भी ब्रैंडन यूनीवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो. नॉर्मली यूनीवर्सिटीज़ का होंदा जदों तुहाडे इंग्लिश च रिक्वायरमेंट जे तुसी फुलफिल नहीं करते हो, जदों तुहाडा वीज़ा लग जाता है तुसी कैनेडा पहुँच के हर यूनीवर्सिटी तुहाडा एक इंग्लिश का टैसट लैंदी है एंड इफ यू क्लीयर दैट टैसट दैन द ESL पार्ट इज़ वेवर्ड. सो स्टूडेंट्स जे तुहाडे बैंड घट है तां भी तुसी किसी भी यूनीवर्सिटी विच अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो. मोस्टली यूनीवर्सिटीज़ एक्सैप्ट करदियां और कई यूनीवर्सिटीज़ नहीं भी एक्सैप्ट करदियां. सो जे तुसी किसी यूनीवर्सिटी अप्लाई करना चाहते हो तो लैंडमार्क इमीग्रेशन बहुत सारिया यूनीवर्सिटीज़ रिप्रजेंट करता है. ब्रैंडन यूनीवर्सिटी मैनीटोबा इज़ वन ऑफ दैम. इफ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्लाइंग इन ओंटारियो then they are very reputed universities we represent like Wilfrid Laurier University, Trent University, the New Brunswick University of New Brunswick, Nova Scotia which Cape Breton University, Alberta which St. Mary University, and the list is really long. Like Prince Edward Island दी भी बहुत ज़्यादा students
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਆਲਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ. So we represent a lot of universities, so you can get in touch with our expert team and we'll guide you accordingly. So students, you can call us at 90413 90412 or send your documents for assessment at info@landmarkimmigration.com. I will be able to assess your documents and advise you accordingly. We are almost completing 14 years in next month, and we will be able to guide you properly because we have vast experience in this student visa field. So get in touch with us, visit our nearest office, and I will always tell all the students to be motivated and be positive. Thank you.